Have they joined the session? Last time we were discussing about the method of joints. Do you remember that what we had discussed last time? Can anyone summarize? Are you all able to hear me, or have you just kept your mobile phone and left for the session? Okay. Hope you are able to see the screen. This was something that we were discussing last time. Okay. So we had started with the structural analysis. We discussed that what was the earlier course of our structural analysis. Means structural analysis basically means your analytical part where you are trying to analyze the structure. Okay. And that structural analysis or the analytical part related to structure. See, there are different stages of learning. One stage is just listening to something. Okay. That is basically your conversation level skill that you are able to read and write something. Okay. You don't understand it. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग कुरान मजीद की तिलावत करते होंगे. So at that time you are just reading the Arabic. You don't, most of you, I don't know how many of you, but most of you, I think so, don't understand the exact meaning of those verses, that what is written over them. Okay. So that is called the first level of what you can say learning. Okay. Then there is second level of learning, that is called understanding. That whatever you are reading or whatever you are hearing, you are able to understand that कि भाई ये क्या हो रहा है. Okay. Or what exactly it is, definitions and all those things. Okay. Second stage of learning. Then there is third stage of learning, that is called analysis. Okay. There is third stage of learning or next stage of learning, that is called analysis. That means जितना आपने अंडरस्टैंड किया, आपके सामने एक प्रॉब्लम था. पहले समझो कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा था, आपने पढ़ा. ठीक है. जैसे कि एक प्रॉब्लम मैंने मैथ्स का आपको दिया और वो मैथ्स के प्रॉब्लम को आपने इंग्लिश में बस पढ़ लिया. सेकेंड स्टेज, आपने उसको पढ़ के समझा कि अरे ये तो एक मैथ्स का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है. थर्ड स्टेज, आपने उसको सॉल्व किया. ठीक है. एनालाइज किया. ठीक है. उसके बाद में एक और स्टेज आता है, दैट इज कि वो प्रॉब्लम के जैसा, उस मेथड के जैसा कोई और प्रॉब्लम आपको दिया जाए और वो प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर. सो दैट इज अनदर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप उस मेथड से रिलेटेड, उस जिस बेसिक मेथड से रिलेटेड वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व किया. और उसके बाद में एक और लेवल आता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिजाइनिंग. ठीक है. डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है कि आप उस एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हो और उस प्रॉब्लम के लिए आप उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है. एक और एग्जांपल से हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग लेट अस अंडरस्टैंड कि जैसे एक बॉटल है, तो फर्स्ट स्टेज हो गई कि आपको उसका नाम पता है कि इसको बोलते हैं बॉटल. सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग हो गई कि आपने बोला कि ये बॉटल है और ये बॉटल के अंदर हम लोग इस तरीके से लिक्विड वगैरह कुछ भी भर सकते हैं और इसका ऐसे ढक्कन वक्कन क्लोज कर दो तो उसमें से लीकेज वीकेज नहीं होता है. वी कैन स्टोर थिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स. आपको उसका थोड़ा पर्पस समझ में आया. देन देयर इज थर्ड स्टेज, एनालिसिस. आपने उस बॉटल को ध्यान से देखा, समझा कि अच्छा ये बॉटल ऐसी है, ये प्लास्टिक से बनती है, इस तरीके से है, वगैरह वगैरह वगैरह. आपने उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया. यू एनालाइज्ड इट. यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बॉटल. ओके. दैट इज
another stage of learning. Then next stage, you created the same bottle. एक बॉटल को देख के उसके जैसी दूसरी बॉटल बना लेना. That is next stage of learning, next stage of understanding. And then last stage which is called design. मतलब अब आपको पूरा नॉलेज हो गया है, तो आपके सामने कोई बॉटल नहीं रखी है और आपको एक क्लाइंट ने या आपके मन में या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, एक रिक्वायरमेंट्स है आपके पास में कि मुझे ऐसा बॉटल चाहिए जिसमें इतना स्टोर होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, या ये उसकी फीचर्स होने चाहिए. एंड विदाउट एनी plane of reference, you now start creating a bottle based on the knowledge that you had. That is called designing. ठीक. Currently we are at an analysis subject. ठीक है. तो एनालिसिस के अंदर भी हम लोग जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के पार्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट रिक्वायर्स यू टू हैव दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे ये एनालिसिस के जो पहले चैप्टर्स थे, दे स्टार्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2. उसमें क्या रहता था, एंड ऑल दोज थिंग्स, सिलेबस कंटेंट एंड ऑल दोज थिंग्स वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम. ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज द डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैव जॉइंड टुडे एंड मोस्ट प्रोबब्ली दे वुड लाइक टू नो कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था. एंड सॉरी फॉर स्टार्टिंग लेट, but actually I am not feeling well. I was diagnosed with malaria yesterday, and because of that I just took a medicine and I'm just trying to conduct the lecture, and probably we will finish a method of joints problem by today. Okay. And I will share a assignment related to method of joints and method of sections by next week when we will finish method of sections also. Okay. Now, then I told you कि पहले 4 चैप्टर थे एनालिसिस के, फिर उनको कंप्रेस कर दिया गया by Mumbai University. Now this compression and all those things which are happening right now, these are because they want to bring the civil engineering which is taught in the Mumbai University at the level, at the international level. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने क्रेडिट्स होते हैं, जितने आवर्स उसमें दिए जाते हैं और कितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखा जाता है, वो सब चीज़ के मद्देनज़र उस सिलेबस को मॉडिफाई किया गया है अकॉर्डिंगली. ओके. क्योंकि पहले ज़माने में कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, आपको मैनुअल कैलकुलेशन, हैंड कैलकुलेशंस पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता था. अभी ऐसा नहीं है, कंप्यूटर्स पे आपको ईजिली कैलकुलेशंस करके मिल जाते हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर, the best engineer will be the person who is able to do the calculations by hand rather than the person who is able to do quickly on the software. Try to understand what I am trying to say. जो बंदा हाथ से कैलकुलेशन करने के काबिल है, it is not necessary that person needs to do it every time, but the person who is able to do the analytical part of making the SFDs and BMDs with hand, ये चीज़ जो शख्स बहुत अच्छे से हाथ से कर सकता रहेगा, that person will be the very best engineer. क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट सही है या गलत है, ये उसी शख्स को पता चलेगा जब वो देखेगा और बोलेगा कि अरे हाँ यार, ये SFD का जो शेप जा रहा है ये इतना ही जा रहा है जैसा मैंने कई SFDs बनाए हैं सिमिलर पैटर्न के, उसके जैसा दिख रहा है. इसका जो लोड है बराबर, मैंने एक बार 100 किलोन्यूटन मीटर वाले UDL का बनाया था तो मुझे 200 का वैल्यू आया था. अभी मैं 1000 का बना रहा हूँ तो मुझे 2000 का वैल्यू आया है. सो आई थिंक दैट दिस मोमेंट इज लुकिंग अ लिटिल बिट करेक्ट. तो ये उसी शख्स को आ सकता है जो शख्स हाथ से कैलकुलेशन करना जानता हो और इन सब चीज़ की प्रैक्टिस करता हो और फटाफट क्विकली हाथ से कैलकुलेशन करके शॉर्ट फटाफट चेक कर सके. अगर जो शख्स ऐसा सोचे कि ठीक है मैंने एग्जाम पास करने के लिए तो कर लिया है एंड अभी कंपनी के अंदर तो सॉफ्टवेयर पे ही करना है एंड ऑल दोज थिंग्स, एट दैट टाइम इफ योर सॉफ्टवेयर इज गिविंग यू अ रॉन्ग रिजल्ट एंड यू आर प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर बॉस, is going to scold you and he might humiliate you also in front of all the colleagues and all. So just try to remember this. You need to be perfect in your hand calculations, then and then only you will be able to practice it on the software. It is very easy to learn a software. Okay, any person can go to Google or YouTube and there are thousands of videos available for you to learn any of the software like ETABS, StatPro, Struts, AutoCAD, Revit, Google Sketch. There are so many softwares that you can learn for different designing and analytical parts and 3D modeling of the structure. Okay, but for all these analytical softwares you need to understand. देखो, आप कभी कोई टूल यूज करते हो, कैची भी अगर आप यूज करते हो तो आपको पता होता है ना कैची कैसे वर्क कर रही है, और अगर वो वर्क सही कर रही है या गलत कर रही है तो आप उसको एसेस कर सकते हो कि ये नहीं कट रही है बराबर से या ये अटक रही है, वॉट एवर एक्सवाइज, बिकॉज यू अंडरस्टैंड हाउ that particular tool works.
इसीलिए आपको ये एनालिटिकल सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है. आई एम टेलिंग यू वेरी सिंसियरली, प्लीज़ ट्राई टू रीड बुक्स. इससे रिलेटेड जो बुक्स आपको सिलेबस में दी गई है उसमें से 2-3 बुक्स आप उठाइए, कोई भी उठाइए, एंड try to read those books like Harry Potter or something, okay, so that you understand exactly कि वो मैट्रिक्स मेथड कैसे वर्क करता है और किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को मैट्राइसिस के फॉर्म के अंदर वहाँ पे हमारे अननोन्स को पुटअप करते हैं, सो दैट कि वो जो फोर्स मैट्राइस और स्टिफनेस मैट्राइस को फिर सॉल्व किया जाता है एंड वी गेट अवर आंसर. दीज मेथड्स आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर. अब ये सॉफ्टवेयर उसके तरीके से सॉल्व करता है और फिर आपको आंसर देता है. अगर आपको हैंड कैलकुलेशन से ये चीज़ें करना आती होगी तभी आप सॉफ्टवेयर की गलती निकाल सकते हो. अदरवाइज व्हाट यू विल थिंक इज व्हाटएवर सॉफ्टवेयर इज गिविंग मी इज द करेक्ट डेटा, and might happen that there is not someone who is going to assess you or something like that, and might be that the structure will fail, or might be that you will get humiliated. Okay, so instead of all these things, if you want to progress through a proper path, then please try to read the books and understand the matrice methods. Okay, so the new content is of all the 3 subjects that we had discussed last time. We started discussion on the pin jointed frames. Okay, so we were first going to discuss some pin jointed 2D planar coplanar trusses. Okay, so for that we first started okay, sorry. So first we started our discussion on 2D planar objects, then simple loading in that particular plane, and accordingly what are going to be the reactions, how we consider it to be determinate and indeterminate, what are the conditions of equilibrium which give us the different equations, and how many support reactions can be calculated. Okay, the first problem we took as a both hinged, okay, then both roller, then we tried a fixed support with a hinge. At that time we have 5 unknowns and we have only 3 equations. Okay, then we made the free body diagram of a hinge. Okay, so if we try to separate the hinge, the free body diagram looks like this. Okay, so there are going to be 2 reactions in opposite directions of equal magnitude which are going to act at the same point. Okay, and we were discussing this using 2 metal plates. So we are considering 2 different metal plates which are joined using a single screw, and the reactions are getting transferred at that particular point. Hope the diploma people will understand quickly. So we started our discussion. Okay, with the truss, and in the truss there are different types of truss that we discussed. Okay, we just took a sample example or just a basic design of truss. On that truss we discussed that there are going to be a hinge support and roller support, there is going to be roller reaction, hinge reaction, okay, and few external loads which are acting. Because of that it is possible to have different sort of loads. Now I've just for a sample shown like this, but because of the bending most probably it is possible at the top side it might be compression, at the bottom there is going to be tension, and the intermediate members are going to be in compression as well as tension depending on their orientation. Now different types of trusses can be classified by different types. Now the types can be based on shape. So based on shape different types of trusses can be box truss, it can be fin truss, okay, rat truss, king truss, queen truss. These are different types of trusses that you can see. Okay, then based on the stability or the analytical part which we are concerned with, basically we say that stability of the truss, the different types of trusses are unstable, stable, rigid, and over rigid. Okay, now for that discussion what we did was we considered a box truss. We have added these 2 extra members afterwards, but previously there was only 4 members, and for 4 members we had applied a force F over here, and we used to check it using M is equals to 2J minus R. This is the function that we get for checking whether the truss is stable, unstable, or rigid or over rigid. Okay, so we apply that concept over here.
So we checked for all the three conditions. First for four members, so we get m is less than 2j minus r, so it was an unstable truss and that was not able to maintain its equilibrium if any external force was applied. Then there was five members, we added one more member. For that we got m equals to 2j minus r, which was the condition of stability, and our truss was stable and able to maintain its equilibrium. Then we added one more member and members became six, and for that we didn't provide any internal hinge over here at the center, and we tried to calculate by using that formula where the joints were 1 2 3 4 only, and then we got the value m is greater than 2j minus r, which tells us that the number of members are greater than what is required for maintaining the equilibrium. That means the structure is over rigid. Okay, over rigidity means that there are extra number of unknowns which needs to be determined, and because of that what will happen is the structure becomes indeterminate and you might not be able to solve the structure using your regular methods. Then we were at a problem of solving a truss using method of joints. For that we took a question, find the internal forces in all the members. We took a truss, okay, A, B, C, D, E. I hope everybody would have taken notes and written it. In that, what we did was we provided a hinge support at A and roller support at D. We took a 10 kilonewton load at B in horizontal direction, 10 kilonewton load at C in vertical direction. The vertical height of the truss was 3 meters, and the horizontal dimensions were 4 meter and 4 meter. If you want the topmost portion as well, we can put it over here as that as 4 meter as well. Okay, this 4 meter and 3 meter are the distances required for us to calculate the what we can say angles. ये जो inclined वाले members है ना, ये inclined वाले members के angle चाहिए रहेंगे. उसके लिए these distances are important. Otherwise, we don't have a use of these distances other than that. And to write the moment equation. Okay. Now, last time, what I felt was that some of the students don't even know that what do we mean by a moment equation and how to write a moment equation, which is a very disturbing thing to know, because in first year mechanics there is a concept where we find out the general force system. We try to solve the general force system. If anybody can tell me that name of the method. Varignon's theorem. Anyone remembers that? Yes. Varignon's theorem? Yes, sir. Okay. So how did you solve the Varignon's theorem, or what was the statement of the Varignon's theorem? Can anyone repeat for me Varignon's theorem? खाली नाम याद है, आप हिंदी में भी बोल देंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. Don't worry, even if you are wrong, you still don't have your BE degree with you. Sir, moment at a particular point, the clockwise moment is equal to the anti-clockwise moment at a particular point. ठीक है, थोड़ा बहुत. What else? Can anyone add to this? ओके, सी हम लोग यहाँ पे आपके डेफिनेशन जज करने नहीं बैठे हैं. हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये बात करने के लिए आए हैं कि आपको पता भी है कि वेरिग्नन क्या है या नहीं है. वेरिग्नन मेथड में वेरिग्नन भाई ने ये बात बोली थी कि जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट उतना ही मोमेंट प्रोड्यूस करता है जितना सारे फोर्सेस जितने भी हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो मिल के प्रोड्यूस करते हैं, सेम मोमेंट प्रोड्यूस करेगा. दैट मीन्स द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दैट पर्टिकुलर resultant will be same as the rotational effect produced by all the other forces combined together
at the same point of reference. अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जब मैकेनिक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तभी ये रोटेशन वोटेशन की जो बात हम कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल फोर्सेस के मोमेंट का स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, उसी को तो हम लोग मोमेंट इक्वेशन बोलते हैं। तो जब आप फर्स्ट ईयर से मोमेंट इक्वेशन सीख रहे हैं, आपने मैकेनिक्स वगैरह शायद पास किया ही होगा and all those things, and at this stage when you are at the last chapter of structural analysis and you tell me that I don't know what is a moment equation, so that is something that worries me, that how will you clear this examination if this examination has to be conducted physically in the college and you have to solve the numericals and all those things. You need to understand these things. एवरीथिंग कैनॉट बी जस्ट पास बाय एंड सेड कि ओके ठीक है सर, मैं कुछ तो ऐसा रट लूँगा और कुछ तो ऐसा कर दूंगा, ओके, बिकॉज our emphasis is that all the engineers should be of a good quality engineers. There should not be subpar engineers that should just fly down the radar and after multiple attempts just get passed and be thrown into the industry. Okay, everyone should think about it. If you are lacking in any of the subject or any of the concepts, all the books and all the materials are always available for you. The only thing that is required out of you is that एक आपके दिल से वो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ को मैं पढ़ लेता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ. ओके, एंड इवन आफ्टर दैट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन डिस्कस इट विद मी कि सर मैंने पढ़ा लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप क्या मुझे बताएंगे? आई विल ऑलवेज टेल यू. ओके, now we have started discussing that there are two 10 kilonewton loads, 4 meter horizontal members, vertical height is 3 meters, and we are trying to solve this by method of joints. Now method of joints and method of sections are two methods by which we can analyze the truss. Now method of joints and method of sections can be applied only to statically determinate or stable trusses. Okay, so first we used to check the stability of the truss. So first we counted the number of members. The number of members was 7. Then we took number of joints. The number of joints were 5, and the number of R is the external reactions. So external reactions were 3. M is equals to 2j minus R, 2 into 5 minus 3, 7, 10 minus 3, 7 is equals to 7. So we got it as a stable truss. Okay, so we can write over there that truss is stable and determinate, and we can start solving it. So now we again draw the truss, and in place of the supports we will remove the supports, and in place of supports we provide the reactions. Okay, external reactions, and then we try to solve the truss. To solve this truss, first we consider the complete truss as our free body diagram, just removing the supports and considering the truss as our free body diagram, and using that we apply the conditions of equilibrium to the complete truss. We apply conditions of equilibrium to the complete truss, which is summation fx0, fy0 and moment 0. First we use the equation of summation of moment at a is equals to 0. HA into 0, VA into 0 passes through A. Then we took that clockwise negative and anti-clockwise positive. So 10 into 3. This first force of 10 kilonewton into 3 was causing a clockwise rotation about point A. About point A. Okay. A के ऊपर अंगूठा रखना है और अंगूठा रख के आपको देखना है कि फोर्स कहाँ जा रहा है. अगर वो अंगूठा रख के आप इस तरीके से पेपर पे भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेयर द फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट द स्ट्रक्चर अलोंग दैट पॉइंट. ओके, so that way also you can see, you can put one finger on that and another finger like this, and then you can try to see the rotation or visualize the rotation. So there are multiple ways. Okay, whichever you feel comfortable that way, but be confident about the direction of rotation. Okay, be always confident about the direction of rotation, because if one of the plus minus signs you put it wrong into the equation, the answer will come different. Okay, so solving the equation, putting everything. So this is 10 into 3. Over here we used to solve this. This is 4 meters. This is at the center. So 2 meters, 2 meters. Okay, this is an isosceles triangle. So we took it that perpendicular is going to come at the center. So this is 2 meters, 4 meters, 6 meters. So 10 into 6. Again the rotation is happening in the clockwise direction. Okay, so we took minus 10 into 6 plus RD at a distance, perpendicular distance, line of action of the force is 8 meters. So we took that, take the point A RD. So the rotation is happening in the anti-clockwise direction. So we took plus RD into it, solved the equation, we got the reaction as 11.25 kilonewton. And the answer was coming positive, hence the direction was positive. We have kept it like that. जो डायरेक्शन है वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा.
Then we went and solved it for the horizontal one, okay, HA, and A की horizontal force है which is acting in the positive x direction, so the reaction is going to be in the negative x direction. Okay, so HA came out to be 10 kilonewton, that is in negative direction. Then about the VA, we applied the equation of summation Fy is equals to 0, VA minus 10 plus RD is equals to 0. Why minus 10? Because only active force in Y direction is the 10 kilonewton one, and the other two forces are in the upward direction as assumed by us. So VA minus 10 plus 11.25 is equals to 0. Finally solving the equation, we got that answer is negative. So the direction of VA that we assumed as upward is wrong, and the direction needs to be changed. So VA is equals to 1.25 Newton in kilonewton in downward direction. Now what we did was, now this is the same truss, okay, A, B, C, D. But now what we did was that we now broke the truss for the method of joints, okay. You don't need to do like this. I'm just explaining you in a manner of saying that way we have isolated every joint, and I was trying to show you that how many number of unknowns are there at every joint, okay. And for method of joints, for using the method of joints, we start from 1 1 1 1 joint, okay, and we try to solve it. So for the first joint that we need to select, we need to understand that when we isolate a joint, which type of force diagram it becomes. Now, if you see any one of these diagrams, okay, आप किसी भी joint को देखिए, आप E को देखिए, A, B, C, D, किसी भी joint को देखिए, which type of force system do you think it is? Concurrent. Concurrent force system, correct. Okay, so it is concurrent force system. Okay, concurrent का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट के अराउंड डाइवर्ज या कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है. If all the forces are converging and diverging through a single point, then they are called concurrent force system. Everyone agrees to this? You understand this particular concept? Okay. Now, what are the properties of a concurrent force system? What do you think? एक concurrent force system का हमारे ये जो ट्रस सॉल्व करने से क्या लेना देना है और हमें इससे क्या मतलब है? What does it matter to me whether the system is a concurrent force system in equilibrium or whether it is a general force system in equilibrium? Are you getting it what I'm trying to say? जैसे हमने पहले ट्रस को जनरल फोर्स सिस्टम के तरीके से कंसीडर किया था पूरा ट्रस, ओके. व्हाई डिड वी डू दैट? बिकॉज वी हैड 3 unknowns to be determined. External unknowns were 3 unknowns which we needed to be determined, and because the distances were available with us and we had an option of writing the moment equation and using the condition of summation of moment is equals to 0, okay, with also summation fx is equals to 0 and summation fy is equals to 0. क्योंकि हमारे पास में 3 इक्वेशन यूज करने की पॉसिबिलिटी थी और उस सिस्टम को देख के ऐसा लग भी रहा था कि वो पैरेलल फोर्स सिस्टम नहीं है, फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है. सो वी यूज द जनरल फोर्स सिस्टम. The advantages, disadvantages, or what you can say properties of different force systems are different. You need to understand those properties. जैसे कि concurrent force system है, तो concurrent force system के अंदर you can write only 2 equations. That means the maximum number of unknowns that you can determine is 2 unknowns. Why only 2 equations? Because you cannot write a moment equation for this particular concurrent force system. And why you cannot write a moment equation for this particular force system in equilibrium? Z एक्सिस नहीं रहता ना सर. Sir, movement at particular point cannot be found. क्योंकि सारे फोर्सेस है ना एक ही पॉइंट के थ्रू जा रहे हैं और डिस्टेंस है ही नहीं उनके बीच में, तो every force is creating a zero moment along this point.
Because of that, you won't be able to write moment equation for this particular what you can say a free body diagram. This is basically a free body diagram. Okay, free body diagram will give you a force system. Any object, anything you take, you separate it from its environment, you get a free body diagram. Okay, so अभी मैंने आपके सामने जो बनाया है, ये जो आपको यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है, okay, this is basically free body diagrams, multiple free body diagrams of every joint. If every joint is separated, how every free body diagram is going to look? Free body diagram of A, free body diagram of B, C, D, all the free body diagrams, how they are going to look. Now tell me, if it is a concurrent force system and only two equations can be applied, okay? Summation Fx is equals to 0 and summation Fy is equals to 0. Only two equations can be applied, okay? In that scenario, which joint should I select first? C. Is there any other joint that I can select? D also. We can select D also, okay? So you can start from A and you can start from D as well, okay? But you cannot start from E because there are 4 unknowns. You cannot start from B because there are 3 unknowns. Similarly, C has 3 unknowns, okay? So let us start with A, okay? So for A, FBD of joint A, okay? Now how is the FBD of joint A going to look? There is going to be a point A, okay? Point A. यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है V है, बराबर है, which is I think 1.25 kilonewton in downward direction. Is it correct? Then there is one force in negative Yes, x sir. direction, which is 10 kilonewton, okay, which is HA, okay. Then there are two unknown forces, okay. Two unknown forces are there. These unknown forces, let me make one of them that goes from A to, कौन सा पॉइंट आता है बीच में? E आता है. Yes, sir. Okay, so this is called FAE, F force FA to E. Now we are keeping the direction outward from the joint, okay, which is called tension direction. Okay, we'll discuss tension or compression क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, what are the directions and how we do that. But right now, for the purposes of understanding and sign convention, try to understand for internal stresses or internal forces, we just for the truss part, we consider tension as positive and compression as negative. Okay, ये साइन कन इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन अच्छा हो जाता है और कंप्रेशन बुरा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? साइन कन्वेंशन डजंट मेक समथिंग गुड और बैड. आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. दैट डजंट sir. मेक एनी. हाँ, ऐसा मत समझ लो कि स्ट्रक्चर के लिए टेंशन आया तो अच्छी बात है, बिकॉज वी ऑलवेज टेक इट एज अ पॉजिटिव. क्योंकि हमें जरूरी है जानना कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा, या व्हाट वी कैन से देयर इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सेंस ऑफ फोर्स क्या रहेगा. ओके, सेंस ऑफ फोर्स मींस कि वो कंप्रेस कर रहा है या वो टेंसाइल है. ओके, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है कि फोर्स कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे दोनों जो फोर्सेस हैं वो भी टेंसाइल है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ खाली. ओके, I don't exactly know that what is going to be it. I'm just assuming. Okay. यहाँ पे जो force है, I think this is force AB. Is it true? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये तो horizontal है, ये vertical है, ये FAE जो है वो horizontal है. Can you tell me the angle? Why I need angle? Because I need to resolve this force to summation Fx and Fy. Can you give me the angle for this? 60. 60. 60, sir. Okay. How did you get that? आइसोलेटर 60 Uh, होता है ना, हर एंगल 60 होता है ये ट्रायंगल पे. ओके, आइसोसेलेस के अंदर 60 नहीं होता है, इक्विलैटरल के अंदर 60 होता है. सॉरी. Okay, don't worry about that. You actually have the truss diagram with you. If the diploma students have not made the truss diagram, you can start making the truss diagram. This is the original diagram here with us, and we'll start making a few angles in it. Okay, let us find a few angles. Okay, कितना एंगल होगा इसका? Let us find.
तो इसका एंगल कैसे निकालेंगे अगर हमको इसका एंगल निकालना है तो? साइन थीटा बाय साइन। ओके, तो अगर इसका मुझे निकालना है तो यूजुअली हम लोग tan इनवर्स यूज करते हैं। ओके, आप साइन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साइन या अगर हम लोगों को कॉस यूज करना है ना तो हमको हाइपोटेनस का लेंथ पता होना चाहिए। ये फिलहाल जो हमारे पास में केस है ना उसमें हमको हाइपोटेनस का लेंथ पता नहीं है, ठीक है, इंक्लाइन मेंबर्स का लेंथ पता नहीं है, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि हम लोग है ना tan यूज करेंगे। tan के अंदर अपोजिट और एडजेसेंट साइड रहते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कितना इसका एंगल रहेगा। ओके, सो ये इसका एंगल है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का हाइट सेम रहेगा 3 मीटर्स, बराबर है। तो ये 3 मीटर हो गया, ये टोटल 4 मीटर था तो ये हो जाएगा 2 मीटर। डू यू एग्री? यस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एकदम आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है। सो एक्चुअली कितना है मुझे नहीं पता, एक्स एक्स है समझो, लेकिन इट इज सेम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो दिस इज 2 मीटर्स एंड 2 मीटर्स, सिमिलरली दिस इज 2 मीटर्स एंड 2 मीटर्स। ओके, सो मोस्टली तो डायग्राम सेम है। नाउ इफ आई टेक इट, तो मुझे अगर थीटा का वैल्यू निकालना है, ये थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse of opposite side divided by adjacent side। थीटा का अपोजिट साइड क्या है? 3 मीटर। एडजेसेंट साइड क्या है? 2 मीटर। डू यू अंडरस्टैंड? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए बी एंड दिस परपेंडिकुलर पॉइंट। ओके, ये छोटे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। कैन यू सॉल्व इट इन योर कैलकुलेशन? गिव मी द वैल्यू ऑफ थीटा। Sir, 56.3. 66 पॉइंट 56.3. 56.3। Is it correct? Everyone, are you getting the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us take it as 56.3। okay, 56.3। तो अगर ये थीटा 56.3 है तो ये भी सेम ही होगा, ठीक है, 56.3। ओके, सिमिलरली ये भी 56.3 होगा। आर यू गेटिंग इट? ऑल द एंगल्स आई एम टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। 56.3। सो दिस वे आई हैव टेकन ऑल द एंगल्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं ना वो अपोजिट एंगल वाला, पैरेलल लाइंस का, दैट वे we can transfer the angle over here also. This is also going to be with respect to horizontal 56.3. This is also going to be 56.3. Okay, so we now know all the angles and all the angles are also for all the inclined lines 56.3. Basically we have taken a very simple problem. Okay, that's why angles are same, but in some of the problems you might find that the lengths are different, so you have to keep that in mind and accordingly calculate all the angles. I hope you understand how we calculated the angle theta and how to apply this concept and calculate angles for any inclined members that you have. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us go back to our free body diagram and put the angle over there. Okay, okay, so we're discussing the free body diagram of joint A, and the angle that we got is known to us, so we'll put that known value over here as 56.3. Okay, this is the angle. Now if I want to resolve this force, obviously it is going, मैं resolution यहाँ थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ लेकिन आप understand करिए कि resolution actually यहीं हो रहा है. Okay, if we are able to see, let us make it like this. This is FAB. This is the angle. This is cos and this is sine. Okay, this is cos of the angle. अगर in the direction of theta rotate करते हैं तो cos मिलेगा आपको, और इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा से हटके अगर आप करेंगे अदर साइड पे तो आपको साइन मिलेगा. सो दिस इज टू बी साइन ऑफ 56.3 एंड दिस इज एफ ए बी कॉस ऑफ
56.3. Now this is all based on the assumed direction कि भाई ये टेंशन में है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन. ओके, अभी हमें कंफर्म पता नहीं है, अभी कंफर्म पता चलेगा. ओके, we have first written FBD of joint A, we made the FBD of joint A, and then whatever inclined forces we have resolved these forces. Okay, and now we'll start solving it. Now how to solve this particular problem? Okay, now if you see over here, FAB is an inclined member. Okay, so it has unknown in x direction as well as y direction, but FAE is a horizontal member. Okay, it has unknown in only horizontal direction. So first, if I take summation Fy is equal to 0, we can eliminate one of the unknown into the equation. Yes, बोलिए. Is there something you would like to say? Mubashir, is there something you would like to say? No, sir. Accidentally, I have. Okay, please mute yourself. Yeah. Okay. If there is anything you would like to say, you can tell me. There is no problem. तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम के अंदर क्या करने वाले हैं, हमारे पास में दो ही इक्वेशन है, ठीक है. इक्वेशंस कौन से हैं, एक तो है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक समेशन एफ वाई है. समेशन ऑफ मोमेंट हमारे पास है नहीं है. समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. अब आइदर मैं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पहले यूज करूँ या एफ वाई पहले यूज करूँ, दोनों से ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बार मैं इक्वेशन यूज करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ काम की चीज मिले, ठीक है. अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी समेशन एफ एक्स यूज करूंगा तो एक्स डायरेक्शन में एफ ए भी अननोन है और एफ ए भी अननोन है, दोनों अननोन है, ठीक है. एफ ए बी का भी एक कंपोनेंट है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दो अननोन्स आएंगे. लेकिन अगर मैं समेशन एफ वाई पहले यूज कर लेता हूँ तो उसके चक्कर में जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा, फोर्स इक्वेशन, दैट विल हैव ओनली वन अननोन. ओके, FAB sine of 56.3. Okay, so let us write down first equation for summation Fy. So we'll first consider summation Fy is equals to 0. These are the two conditions of equilibrium. Okay, two conditions of equilibrium. Conditions of equilibrium, COE. Okay, after making FBD, you have to write applying conditions of equilibrium. Such statements you have to write. Okay, it should not be just diagrams and numbers. There should be some theoretical lines as well in your problem solving, because you are actually, when you are solving a problem, you are trying to explain someone, that what is happening. Right now, currently, as I am solving with you guys, what we are doing is discussing verbally. Okay, but when you are writing something in your paper or something like that, or you are doing your calculations, at that time what you have to do, you have to consider that somebody is going to read your calculations, and at that time when the person is going to read your calculation, at that time he should be able to understand that what you are actually doing, where did summation fx and fy come from, because you applied the conditions of equilibrium. Okay, please don't unmute yourself if you don't have to speak anything. Okay, now again coming back to topic, let us write down equation for summation Fy. So FAB sine of 56.3, because the direction of the force or the component of the force is in upward direction, we'll consider that as positive, and 10 kilonewton horizontal ignored, FAE horizontal ignored, and FAB cos of 56.3 is horizontal ignored. So this will not have any effect in the y direction. Then the other force remaining is 1.25 kilonewton in downward direction. So minus 1.25 is equals to 0. Solve this equation and give me the value of FAB. Sir, 1.50. 1.5. 5. What are the 02. decimals?
1.502. Always keep a habit of writing 3 digits after the decimal point. Okay, kilonewton. The answer came out to be positive, so we are going to write T. T is for tension. Okay, that means my FAB is 1.502 kilonewton in tension. Okay, now I have the answer for FAB. So FAB is equals to 1.502 kilonewton. If I want, I can put it into my diagram as well over here. ओके मैंने तो अभी सभी को पॉजिटिव अज्यूम करके चल रहा हूँ. यहाँ पे अगर मैं भी देखूँ तो आई कैन पुट इट ओवर हियर 1.502. ओके, किलोमीटर नहीं डालता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर एक दूसरे से टच होने लगेंगे नंबर्स. So just try to understand everything is in kilonewton. We are working with kilonewton. Okay. Just for your sake, I am putting it over here because next free body we have to select from there. सर बट इट इज ये तो एफ साइन का है ना, मतलब अभी कॉज करनी है तो आप डायरेक्ट इससे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? करेंगे ना बेटा, अभी आप समेशन एफ एक्स का देखते हैं ना कैसे करना है. ठीक है. Okay. Now, this calculation that we did was for summation fy and we got one unknown. हमने क्यों summation fy सिलेक्ट किया? अगर हम summation fx सिलेक्ट करते तो वहां पे हमारे पास में दो unknown आ जाते थे. ठीक है. Now fab is a force and this sin and cos are the जो हमने एक फोर्स को स्प्लिट करके दो फोर्स बनाए उसके. ठीक है. लेकिन एक्चुअली जो मेन कंपोनेंट है फोर्स का, जो फोर्स बोलेंगे हम लोग, दैट इज fab. So from summation fy, I got the magnitude of fab. This value 1.502 is the magnitude of fab. Okay, वो मुझे मिल गया. तो यहाँ पे इसका जो अब वैल्यू हो गया, ये जो x कंपोनेंट है ना यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे 1.502 आ जाएगा अभी. ओके, मैं इसको एक अननोन के तरीके नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा अभी 1.502 cos of 56.3. Are you getting it? Because I know the magnitude now. Now, summation fx is equals to 0. Now for x direction, what are the forces? There is one unknown force FA. Then there is another force, क्योंकि देखो अभी इसका डायरेक्शन कंफर्म हो चुका है कि भाई ये टेंशन है, तो जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया था वो सही है, मेरे को कोई भी फोर्स के डायरेक्शन उल्टे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो जो डायरेक्शन मैंने डायग्राम में बनाया है दैट इज करेक्ट एंड नाउ आई कैन स्टार्ट विद दैट. सो प्लस, बिकॉज इट इज इन द प्लस डायरेक्शन इटसेल्फ. ऐसा जरूरी नहीं है कि टेंशन है मतलब प्लस एक्स और प्लस वाई होगा, वो क्वाड्रेंट्स का खेल होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. All these things are explained to you in mechanics. Okay, so I hope you remember all these things. Okay, what are the quadrants, how the positive x direction, y direction, where the components are. See, like you go to some higher standards, obviously people expect from you that you know the ABCD of the previous classes. Okay, so then only we will be able to progress faster. If everything needs to be explained, then the time will be wasted. Okay, so FA, then FAB cos of 56.3 and minus 10 is equals to 0. Okay, FAE we don't know, plus 1.502 cos of 56.3 minus 10 is equals to 0. FAE is equals to 10 minus 1.502 cos of 56.3. FA is equals to how much? 9.16. 9.16. 9.15. Okay, I told you to give me up to 3 digits. 9.150. 9.166. I don't think there can be too much of a difference. The 9.166. Okay, you are saying 9.166. And what about the person who is giving the value of 9.15? So 9.1. 9.166. Okay. So everyone agrees to this 9.166? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, 9.166 kilonewton, and the answer is coming positive, so that part is going to be in tension. Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. That means the value of FA and the direction that we have assumed is known to us, 9.166 kilonewton. We can also put the same thing
into the diagram that we had over here, and we can now select another free body diagram. Okay, so this we got as 9.166. Okay, अब आपको क्या लगता है जॉइंट बी पे कितने अननोन है? और which is the next joint that we should select? 2. Free body diagram. Sir, D. You can select D. D. D के बाद E. D के बाद E. Now try to understand कि हमारे पास में टोटल A, B, C, D, E टोटल 5 जॉइंट है. ठीक है, अगर हम एक जॉइंट और उसके नियर बाय एडजेसेंट जॉइंट्स, ऐसा कोई रूल नहीं है कंपलसरी, आई एम जस्ट सेइंग, एडजेसेंट जॉइंट्स लेते जाएं और करते जाएं, तो यू विल फाइंड आउट दैट यू बाय द टाइम यू रीच जॉइंट D, आइदर जॉइंट D या जॉइंट E में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? Means actual number of free body diagrams is always one less if all the members are to be calculated, if the internal forces of all the members needs to be determined for a stable truss. The number of free body diagrams that you need to make or the number of joints that you need to consider will always be less than one less than the total number of joints. जैसे अभी यहाँ पे total number of joints 5 है ना, तो हमें 4 बनाएंगे ना तो सारे members का मिल जाएगा. Okay. So which is Okay, the sir. next joint that we should select? D. D. So everyone is of opinion to go for D. Yes, sir. Okay, so let us go for D. वैसे मैं B लेता, कोई बात नहीं, हम D सॉल्व करेंगे. Okay, so let us make free body diagram of joint D. Okay, so I think joint D looks like this. There is joint D. Joint D के ऊपर हमारा एक फोर्स है which is the vertical force of 11.25 kilonewton in upward direction. Then I think that there is one unknown force. We are considering all the unknown forces to be away from the joint, tensile forces. So that unknown force F, अगर ये D है तो ये DE होगा. ओके, द डायरेक्शन सी, जो नेमिंग स्कीम होता है ना फोर्स का, जैसे एफ डी ई क्यों लिखा, एफ ई डी ऐसा, लाइक दैट. सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. द नेमिंग ऑफ द फोर्स कैन डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन अ वे. ओके, so this is force D to E, so that's why we are going to write FDE. Okay, that is an unknown force. Okay, then there is another force which is an inclined force we have over here. Okay, that also we are considering as a tensile force away from the joint force. Okay, so this is FD, so this is probably C, so this is FDC. Angle we have already determined, that is 56.3. Let us resolve the force. So if we resolve the force, then this is one component, this is the another component of the force, this is FDC sine of 56.3, this is FDC cos of 56.3. Okay, very similar problem. Okay, I hope you will be able to understand. And can you tell me that which is the first equation that I should use? Summation of Fy. Okay, so if we use summation of Fy, what will happen? We will be able to eliminate one of the unknown, which is in horizontal direction, FDE, and we'll directly get the value of FDC. Okay, so first we take FDC sine of 56.3, which is in upward direction. Okay, then plus, because 11.25 is also in upward direction as calculated earlier in the reactions, 11.25 is equals to 0. Okay, then FDC
is equals to 11.25 divided by sine of 56.3 minus, because positive 11.25 goes on other side, so that becomes minus. What is the answer of FDC you are getting? minus 13.52. Okay, minus minus 13.522. minus 13.522. 13.522, okay, kilonewton. It is minus, that means what, that मैंने टेंशन अज्यूम किया था, टेंशन नहीं है, वो कंप्रेशन. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरे कैलकुलेशन में अब कंप्रेशन आया, तो इसका जो सेंस है या इसका जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन इज नाउ गोइंग टू चेंज. ओके, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज? नाउ इट इज गोइंग, Downwards. हाँ, कैन यू कम अगेन? Okay, so the components direction as well I have changed over here. Okay, similarly you can see the equation, हमने पहले उसको पॉजिटिव रखा था, हमारा आंसर नेगेटिव आया तो हमने उसको यहाँ पे compression डायरेक्शन में चेंज कर दिया. So that's why I've changed the Sir? direction of the force as well as Sir? the component. Yes, सर वो 11.25 कंप्रेशन है ना? 11.25 कंप्रेशन है, लेकिन हम यहाँ पे कंप्रेशन या टेंशन के हिसाब से समेशन एफ एक्स एफ आई नहीं लिखते. आर यू गेटिंग इट? हम लोग नहीं सर, summation साइन पॉजिटिव लिए ना हमने उसमें. हाँ, लेकिन ये जो 11.25 है ना, ये सपोर्ट रिएक्शन है. दिस इज Okay, नॉट अ sir. मेंबर रिएक्शन, दिस इज मेंबर. ठीक है, ये Okay, सपोर्ट sir. रिएक्शन है. ठीक है, एंड दिस इज मेंबर फोर्स. मेंबर फोर्स एक अलग तरीके का अननोन होता है, उसमें टेंशन और कंप्रेशन होता है, और जो सपोर्ट रिएक्शन होता है वो धक्का देता है, सपोर्ट करता है. ठीक है, उसको कोई दबाएगा तो वो उसको उठाएगा, कोई उससे दूर जाने की कोशिश करेगा तो उसको खींच के वापस लाएगा. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. सपोर्ट Yes, रिएक्शन sir. उसको जो डायरेक्शन में जाना चाहता है वो डायरेक्शन में जाने से रोकता है. ठीक है, ये सपोर्ट रिएक्शन का नाम है, अकॉर्डिंगली उसका रिएक्शन डेवलप होता है. ठीक है, और मेंबर फोर्स जो होता है ना, वो कंप्रेशन और टेंशन के फॉर्म में अपने अंदर लोड लेता है. ठीक है, जो लोड ट्रांसफर का मैकेनिज्म है आप देखेंगे तो कैसे जा रहा है कि यहाँ पे हमने 10 किलो न्यूटन के दो लोड लगाए थे. ठीक है, ये 10 किलो न्यूटन, ये डायरेक्टली ऐसा यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है. यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, बी पॉइंट से ए पॉइंट पे या सी पॉइंट से डी पॉइंट या सी पॉइंट से ए पॉइंट पे पहुँचने के लिए, इट पासेस थ्रू ऑल द मेंबर्स एंड देन फाइनली रीचेस सपोर्ट इन दैट फॉर्म. आर यू गेटिंग इट? तो लोड ऐसे ट्रांसफर होके जाता है. जब लोड इनके बीच में से ट्रांसफर होके जाता है तो इट गोज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस. द मटेरियल फील्स दैट स्ट्रेस. आर यू गेटिंग इट? व्हेन यू अप्लाई फोर्स एट अ सर्टेन एंड, जैसे कोई आपकी उंगली पकड़ के भी खींचेगा राइट हैंड साइड की, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड के शोल्डर से आप हिल जाओगे. दैट मीन्स द फोर्स गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर दैट फिंगर टू दिस पर्टिकुलर शोल्डर, and each and every material inside your body, depending on the cross section, is going to feel a stress. Your finger is going to feel the most amount of stress because less cross sectional area. Your hand is going to probably feel some of the stress, more cross sectional area. Your torso is not going to feel anything because even higher cross sectional area. Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. But force is getting transferred from one place to another. Okay, so similar way, and all the different types of supports and different types of reactions and forces are different. So you need to keep very much clarity in your mind that which is what. Okay, किस चीज को क्या बोलते हैं, किसका क्या पर्पस है, कौन सी चीज कब पिक्चर में आती है, इसका क्या मतलब है. आर यू गेटिंग इट? So all these things, please keep your minds very clear with this, and it can be cleared only and only if you practice a lot of problems. Okay, आप बुक्स पढ़ो, बुक्स को अच्छे से पढ़ो. ये बुक्स पढ़ने से आपको और ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स आपके माइंड में बैठते जाएंगे, और आपको उसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं पड़े तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं. आई विल ऑलवेज एक्सप्लेन यू. आप मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी भेज देंगे, सर मैं ये पढ़ रहा था समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल गिव यू अ वॉइस नोट ओवर देयर कि व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, so I'll try to explain everything to you, don't worry about it. Okay, so coming back to the topic at hand, I hope you understand that this RD is a reaction over here. Okay, this is not compression or tension, this is the external reaction. Okay, coming back over here, तो ये हमने
अभी समेशन एफ वाई को सॉल्व किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ एफ डी सी. Because the value of FDC we got was compression, we have changed the direction over here, and FDC का डायरेक्शन चेंज होगा तो उसके कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा, बिकॉज कंपोनेंट्स आर वर्चुअल नॉट एक्चुअल. आप समझ रहे हैं? कंपोनेंट्स हम क्यों बनाते हैं? फोर्स तो टेढ़ा ही है, लेकिन फोर्स का इफेक्ट एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो रहा है. आई कैन नॉट राइट समेशन ऑफ एफ इन 56.3. आई हैव टू राइट समेशन ऑफ एफ एक्स या समेशन ऑफ एफ वाई. ऐसे में मेरे मन से कुछ भी इक्वेशन लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन इट विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. बट आई एम जस्ट सेइंग कि फोर्स एक्चुअली है 56.3 वाले डायरेक्शन में, लेकिन उसके इफेक्ट को मुझे देखना है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या होगा. तो मैंने उस फोर्स को दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, and then I am calculating that effect. Now if I come to know that the direction of the force which I assumed at the time of calculation is incorrect, and now I know the correct, so it becomes my responsibility to change it before I take summation fx. Okay, अगर मैं summation fx में भी यही ले लूँ कि भाई जो मैंने डायग्राम में बनाया था और चेंज ना करूँ तो आंसर गलत हो जाएगा. Okay, so let us take summation fx is equals to 0. For summation fx is equals to 0, see very clearly, यहाँ पे हमने डायरेक्शन पहले ऐसा दिखाया था, लेकिन अब हमने डायरेक्शन ऐसा दिखाया है. So we'll not consider this and we'll consider this direction. So f bc, which we already know, cos of 56.3, and it is in the positive x direction. So that's why we are going to consider it as plus. And any other force in x direction, it is the another unknown which is in negative x direction, minus fde is equals to 0. अब यहाँ पे जो मैं माइनस और प्लस दे रहा हूँ ना, ये फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से दे रहा हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज नॉट बिकॉज कि ये टेंशन है या कंप्रेशन. आर यू गेटिंग इट? आई एम नॉट एडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन ओवर हियर. व्हेन आई राइट समेशन एफएक्स एंड समेशन एफवाई इक्वेशंस, दैट मींस आई एम कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, नॉर्मल वाला, नॉट द सेंस ऑफ द फोर्स. बट जब मुझे पता चलता है कि मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है. डायरेक्शन उल्टा हो जाने से उस फोर्स का जो सेंस है वो बदल जाता है. उस अगर वो फोर्स टुवर्ड्स द जॉइंट होगा, इसका मतलब वो बाय नेचर एक कंप्रेसिव हो जाता है. ठीक है, अवे फ्रॉम द जॉइंट मतलब बाय नेचर वो टेंशन हो जाता है. दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग दिस. आई कैन नॉट राइट दिस like x direction, y direction, or acting at an angle. This is a member force, so member force needs to be in tension as well as or compression. Okay, so यहाँ पे इस तरीके से हमने इक्वेशन लिखा. जी बोलिए. FD तो कंप्रेशन है ना, तो FD cos 56.3 भी कंप्रेशन होगा, तो वो नेगेटिव होना चाहिए ना. FDE या FDC? FDC. ओके, सो FDC का जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट. तो ये आपका फोर्स है. ये फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो एक जाता है ये डायरेक्शन के अंदर और एक जाता है ये डायरेक्शन में. कैन यू सी द डायरेक्शंस? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी, अगर ये फोर्स है मेरा और ये एंगल है, बराबर, ये डायरेक्शन है ना हमारे फोर्स की FDC की, तो ये हाँ. इसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया. अब मेरा एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में? Even though the force is compressive, that is a different story. Okay, but I'm talking about the direction of the component force. The direction of the component force is in the positive x direction. Whenever I write the equation for this, that time I'm considering the direction of the force. Okay, and after this problem we'll first, मतलब ये joint D होने के बाद में first चीज जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, that is going to be how we consider tension and how we consider compression. Okay, so that part will be cleared in your mind कि compression क्या होता है और tension क्या होता है. Okay, so you will be able to relate that in terms of force. So for now just go with me. FDC, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट का पहले डायरेक्शन आउटवर्ड था, अभी हमने इसको इस तरफ लिया है. So FDC is cos of 56.3 minus FDE is equals to 0. FDC I already know, 13.522, which is the magnitude of this particular force. Cos of 56.3 minus FDE is equals to 0. FDE can be on this side, and 13.522 cos of 56.3.
Solving this, we'll get the value of FD. Can you give me the value of FD? 7.50. 7.503. Anyone can speak. 7.503. 7.503. Okay. (7.503 kilonewton), which is the magnitude of the load we are working with. The answer we got was positive, so we are going to consider that it is going to be tension. और basically मतलब मैंने tension ही assume किया था, तो मुझे direction change करने की ज़रूरत नहीं है. Okay. Now, so we have also determined two more unknowns. So let us put those values of unknowns over here. Okay. ताकि हमारा diagram और थोड़ा सा बढ़ जाए. Okay. So FD जो है वो तो tension ही निकला. So this is 7.502. बराबर. And FDC came out to be compressive. Okay, so for FDC I need to change the signs. Let us make a few changes to the sign. Okay, so Sir, FD 7.503 है sir. 3 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, 7.503 and over here, okay, compressive force and the magnitude was 13 point how much? 522. 13.522. okay, for FDC. अब ये देखो, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. दिस आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. जितना फोर्स आपका ये डायरेक्शन के अंदर रहेगा, उतना ही अपोजिट फोर्स वहां पे एक्ट करेगा. नाउ लेट अस सी हाउ इट एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो एंड हाउ दिस फोर्सेस कम इनटू पिक्चर. Actually, we discussed last time also, but let us make a diagram and make you understand what is compression and tension. Okay. Suppose this is a bar. Okay. One metal bar, one metal plate, whatever you want to imagine, you can imagine. Suppose कि एक स्टील का ये एक बार है, ठीक है, एक मेटल प्लेट है, ठीक है, और वो प्लेट के ऊपर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, दीज आर जॉइंट्स. ठीक है, जॉइंट ए एंड जॉइंट बी. बराबर. मेटल का ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स के ऊपर मैं इक्वल फोर्सेस दोनों साइड से अप्लाई कर रहा हूँ ऑफ मैग्नीट्यूड एफ. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. Yes, sir. Okay. Yes sir. Okay. What do you think that the plate AB is feeling right now? Compression. Is it synonymous with everyone? Do you understand this? Yes, AB sir. is feeling compression. Okay. So let us say that AB is feeling compression. Okay. So it is feeling compression. So what happens internally? उसके इंटरनल वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? फोर्स तो उसको कंप्रेस कर रहा है. इंटरनली वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? नहीं तो प्लेट तो ऐसा चपटा हो जाएगा ना. इट इज ट्राइंग टू टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है. टेंशन कैसे प्रोड्यूस करेगा? रेजिस्ट कर. रजिस्ट कर देगा. It is trying to resist. Okay, we'll say that it is trying to resist. That means it is trying to push both the sides. जहाँ से force ऐसा apply हो रहा है, उसको push करने की कोशिश कर रहा है internally. Okay, so let us make internal with something with a different color. So internal जो effect है, it is something like this. Are you getting it? Yes, sir. Yes sir. Internal effect is like this. Okay, so whenever we show compression in a member, this is an internal quality. This compressive force that we are talking about, this is an internal quality, internal force we can say. Barabar? So internal force, if it is compression, then it is represented like this. Okay, which is towards the joint or compressing the joint. Okay, now let us have another example over here. This is very simple to explain. I thought that this might have been explained to you earlier, but again we'll do it.
so that you will understand. Because I think कि जब आपको सॉम या मॉस में इंटरनल स्ट्रेसेस सिखाए जाते हैं, I thought that at that time आपको पता ही होगा कि ये सब क्या होता है. A है and B है, okay, and again we are applying forces. Both forces are trying to pull from point A and B. What do you think that AB is feeling? टेंशन. Tension, बराबर. It is trying, and what it is trying to do internally, it is trying to push back on itself. Okay, it is trying to push its joints inside, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. This is called your tensile force. अभी अगर आप वहाँ पे ऊपर चल के देखें, आप ये डायग्राम को बराबर अपने दिमाग में बिठा लो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि इंटरनल कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ. अभी मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज़ को तोड़ता हूँ बीच में से, ठीक है, मैंने वहाँ पे क्या किया, मेथड ऑफ जॉइंट्स में मेंबर को तोड़ा ना मैंने, तो मैं मेंबर को ब्रेक करता हूँ बीच में से, ठीक है, ये मेंबर को ब्रेक करता हूँ मैं बीच में से, तो मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा मिलेगा? ये मेरा जॉइंट ए है, बराबर, ये मेरा फोर्स एफ है, ठीक है, एंड फॉर टेंसाइल फोर्स आई एम गोइंग टू गेट force like this, unknown force. Do you agree? Tensile force will look like this away from the joint. If I make a free body, Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? And if I am talking about compression side, if I am talking about a compression side and try to make a free body diagram of joint B over here, so joint A, let us make for joint B for the top part. So there is a force which is acting over here, okay, and there is another force, oh, sorry, this is the external force which is acting, and this is the internal compressive force. Okay, now you understand the direction of forces, why internal forces are like this. They try to balance. अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, क्योंकि आपको पता था कि अंदर कंप्रेशन है, तो आपने उसका डायरेक्शन कंप्रेशन का बनाया, बराबर है कि नहीं? पर ट्रस के अंदर क्या आप देख के बता सकते थे कि किधर कंप्रेशन है और किधर टेंशन है? नहीं बता सकते. सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया कि पहले अज्यूम किया सब चीज टेंशन में, ठीक है. नाउ लेट अस गो टू द डायग्राम अगेन. ओके, ट्रस के अंदर जब ये सारे मेंबर्स फोर्सेस मेरे लिए अननोन थे, तो मैं कैसे बोल देता कि यहाँ पे कंप्रेशन ले लो, यहाँ पे टेंशन ले लो? आई कैन नॉट डू दैट. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड वाज आई अज्यूम दैट एवरीथिंग इज टेंशन. ओके, एक डायरेक्शन मिल गया ना मुझे इक्वेशन लिखने के लिए. जिस इक्वेशन में मेरा आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा है. डायरेक्शन उल्टा होने का मतलब क्या हुआ कि इट इज टुवर्ड द जॉइंट. टुवर्ड द जॉइंट कब आता है मेंबर के अंदर? जब मेंबर में कंप्रेशन होता है. ओके, दैट पार्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू. दैट वे वी केम टू नो दैट वेदर इट इज टेंशन और कंप्रेशन. आर यू गेटिंग इट? हमने ऑलरेडी सबको टेंशन लेके चल रहे हैं. जहां पे हमारा आंसर नेगेटिव आता है, दैट मीन्स माय डायरेक्शन इज नाउ रिवर्स्ड. नेगेटिव का मतलब फोर्स इक्वेशंस और फोर्स कैलकुलेशंस में क्या होता है, डायरेक्शन का मायना होता है, ठीक है. नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज फॉर डायरेक्शन पर्पसेस ओनली. ओके, सो दैट वी कैन सब्सट्रैक्ट एंड ऐड मैग्नीट्यूड्स बेस्ड ऑन द वेक्टर क्राइटेरिया. ओके, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. अभी समझ में आ रहा है कि हमने ये सीडी वाला नेगेटिव आया तो उसका डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द जॉइंट हो गया, कंप्रेशन हो गया. ओके, अभी नेक्स्ट जॉइंट कौन सा सिलेक्ट करना है? सी. कौन सा लेना है? सी लेना है. Yes, sir. See. Yes. Okay, how many forces are there on the joint C? 3, 4. 3. 3. One only. Give me exactly Three. forces. External one है और internal 3. Internal 3. There is one external force and there are 3 internal forces. Okay,
Now, the internal forces are usually the unknowns, but over here we have already determined one of the unknown, which is 13.522, and we know its direction is compressive inside. Okay. What is remaining is to determine the value of FBC and FCE. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So for this particular diagram, you have to make this particular free body diagram. It is looking similar to how your free body diagram is finally going to look. So you can make this free body diagram, start making this free body diagram and show the angles as well. Okay, the angles for all the forces is 56.3, all the inclined forces. Okay, then let us start solving this particular part. F. Now see the direction of force. It is compression, so the direction of force is from D to C. Okay, so that's why we'll consider the direction of the force and accordingly we'll consider the naming over here. Okay, so FDC. Okay, so over here it is at an angle of 56.3. Then there is one force which is acting in the horizontal direction, but that is an unknown force. We don't know the value of that force, so we are going to keep that force FCB. Then there is another force which is acting in the angle of 56.3 in this direction, which is FCE, and okay, and there is another force. It is of 10 kilonewton that is known to us, which is the external. Okay, so this is the force scenario, and this value is also known to us. How much is this? 522. 13.522. Okay, kilonewton. So we know all these things. Okay, will you be able to solve this particular free body diagram? How many of you think that you will be confident enough to solve this? Please raise your hands in the app. Only one, two. Okay. Mm-hmm. Okay. All the diploma people, I think, have raised their hands. Okay. Some of the FE students also I can see. Okay. ठीक है, बाकी के लोग आइदर या तो पैसिव है या फिर हो सकता है कि उनको आता ही नहीं. ओके, सो बोथ ऑफ द पॉसिबिलिटीज आर देयर. If you are passive, please try to keep more attention in the class, and if you are not knowing even after solving two free body diagrams, then I think that you need to practice more. Okay, so let us head back to that. You can remove your hands and let us start solving. Okay, summation, which one should we use? Which one should we use? Now see, over here there are going to be two components. There is going to be one set of component for this particular force,
अब इस फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी like this. This is 13.522, or you can say FDC, cos of 56.3. This is going to be 13.5522 sine of 56.3. About this, there are going to be two components. Now I am drawing these components over here, but try to understand they are on the xy line itself. Okay, दोनों चिपकने नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ. The direction of the component of the force. This is going to be FCE. Cos of 56.3, and this is FCE sine of 56.3. Okay, so these are the components. Now what do you say, whether we should go for summation fx or summation fy? Summation fy is equal to, okay, because we can eliminate fcb over there into the equation, directly get the value of fc. Okay, so fcb एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे एफ वाई के समीशन एफ वाई अगर हम लोग लेंगे तो. सो लेट अस स्टार्ट. तो पहला जो फोर्स आता है दैट इज -10 किलोमीटर विच इज एक्टिंग ओवर हियर इन द वर्टिकल डायरेक्शन बट नेगेटिव. सो -10 किलोमीटर. Then what else? We have 13.522 sine of 56.3, which is in upward direction. So plus 13.522 sine of 56.3. Then what else we have? We have FCE sign, but it is in downward direction. So minus FCE sine of 56.3 equal to 0. All the three forces in y direction we have considered, 1, 2 and 3, all the three forces. Okay, solving this we can get the value of FCE. Okay, so we'll put all the known things on other side and then this. So FCE is equal to -10 plus 13.522 sine of 56.3 divided by f sine 6.3. So the value of FCE comes out to be how much? Can you tell me? 1.502. 1.502. 1.502. Now the answer is coming positive or negative? Positive. Positive answer. Positive. Positive. The answer is coming positive. Okay. So if it is coming positive, that means that the direction of FCE we are assuming over here, that direction is correct, and we can, it is tension. Is it okay? Now you understand these things, what we are doing right now? Yes. Yes, sir. Now let us do summation fx is equals to 0. Summation fx is equals to 0. What are forces in x direction? Minus FCB. Okay, then minus 13.522 cos of 56.3. Okay, as well as minus FCE cos of 56.3 is equals to 0. Okay, now in this this direction is already same because we have not changed it, because we have got a positive answer over here and the tension has been kept in the tension or the exact same direction. So we'll not change that. FCB. So we'll try to now solve this. Now instead of FCE, we already know that it is 1.502. We can replace that and we can rewrite the equation. So FCB is equals to minus 13.522 cos of 56.3 minus 1.502 cos of 56.3 is equals to 0. Okay,
So the answer is coming to be how much? Minus 8.33. Minus Minus 8. 8.336. minus 8.33. Okay. And if we go for 3 digits, 336 minus 8.336. 8.336. Okay. Always go for 3 digits. Okay. FCB is equals to 8.336. But the answer is coming negative. Okay. So that's why मैंने यहाँ पे टेंशन अज्यूम किया था, लेकिन अब वो टेंशन नहीं रहा. ठीक है. That means I need to make changes into that particular force's direction. Okay. I'm going to change the direction. Okay. Now remember that because this is the second part of the problem where you found out that this is compression, that doesn't mean that you need to go to the first part of the problem, because first part of the problem में FCB के value से या उसके direction से कोई लेना देना ही नहीं था. Okay. So it makes no changes. लेकिन अगर first part of the problem में आपको पता चलता है कि compression आ गया है, तो second part of the problem में आपको उसके changes को include करना पड़ता है direction पे. Okay. So now let us go back to the diagram and let us put few values over there. Okay. And make necessary changes. Okay. So first thing that we got to see is FCE. So what is the value of FCE that we got? 1.502. Yes, sir. Okay. So 1.502. Okay. Kilonewton and tension direction is correct. No problem over there. Over here. 8.336, sir. Yes. 8.336 and the direction is towards the joint compression. Okay. मैं रेड और ब्लू यूज कर रहा हूँ तो कंप्रेशन बुरा हो गया, टेंशन अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. This is not about good or bad. This is just because of the sense of direction and all those things we are considering. Okay, please understand. For a member, different materials have different properties. Some materials are good in tension, some materials are good in compression. Okay, so understand that. You can never say that tension is good for the structure, or you can never say that compression is good for the structure. Okay, both things have their pros and cons, and the structure needs to be designed according to whatever loads are going to come. Okay, our purpose as an analysis student right now is to get the exact answers. Is it clear? Yes, sir. Okay, now which joint do you think we should solve? B. Now which actually, what is the last unknown which is remaining? FBE. FBE. Okay. FBE. Yeah, FBE is the last unknown which is remaining. Okay. Now, over here, if you have to choose, how will you choose whether to go for joint B or joint E? Okay. So, if you see the free body diagram of joint B and joint E are almost similar, they are just mirror of one another. Okay. So, either you go for joint B or either you go for joint E, it is going to be same. So, whichever you say, we'll start with that and we'll finish it off. Okay. And it will just require one equation because there is only one unknown. Which one do you want me to take? Should I take B or should I take E? B. Okay, let us go with B. okay. सर ई से जाएंगे तो कुछ अलग इक्वेशन रहेगा ना सर थोड़ा. इक्वेशन देखो, जिसका फ्री बॉडी बनाओगे इक्वेशन उसी जॉइंट के ऊपर आने वाले फोर्सेस के हिसाब से बनेगा. ओके. तो अगर आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बी पे आने वाले फोर्सेस के हिसाब से आप इक्वेशन लिखोगे, आंसर सेम आएगा. Those of you who want to make the free body diagram of joint E can make for joint E and start solving. And those who want to make for B can make for B and start solving. The answer will come same. Okay. दिमाग ही काम नहीं कर रहा है मेरा.
This is my joint B. Let us make some x and y axis. Now over here I think there is an external load which is acting over here on B, which is a magnitude 10 kilonewton. Then I think that there is a known force over here which is a compressive force. So it is compressing the joint. Which is the force FBC, or because of the direction of the force we can say that FCB as well. This is compressive, so we are making over here. I think the magnitude is 8 point something. What is it? 8.336. 336. 8.336 kilonewton. Then there is one force which is acting in this direction, one force which is acting in this direction. Okay, so the force acting in this direction is known to me, and I think that it is a tensile force, so it is away from the joint. And this is, I think, FBA, and the magnitude of this force is how much? 1.502. Can anyone tell me what is the magnitude of force BA? 1.5. 1.502. 1.502. Okay. And then I think that there is only one unknown force which is acting over here, which is in this direction. And this is FB, which we don't know, at an angle of 56.3, at an angle of 56.3. This is the question. Now, even if I take summation fx or summation fy, there is going to be a component of FBE in that particular direction. Okay, this force can be resolved into two components. This force can also be resolved into two components. Okay, cos theta and sin theta, cos theta and sin theta. Okay, so let us write down any of the equations. So let us have the smallest of the equations. So smallest we can get by taking summation fy is equals to 0. If I take summation fy is equals to 0, then what I get? I get is, because it is in negative direction, minus f BA sine of 56.3 minus f BE sine 56.3 is equals to 0. Solving the equation, I get f BE is equals to minus FBA का value है 1.502 sin 56.3 divided by sin of 56.3. So I think that sin of 56.3 and sin of 56.3 will be cancelled, and FBE is equals to minus 1.502. So minus 1.502 kilonewton means 1.502 in compression. Is everyone getting the same answer? Yes, sir. Yes, sir. That means the direction that we have assumed is incorrect, and now we need to change the direction. No further calculation is required because the last unknown FB is also determined. So now we can put it into the truss and we can finalize our truss. Okay. So if you're solving a truss, then after the solution of the truss, either you need to make a table in such a format in which you say that member, write down all the members, then force in kilonewton. Okay, and then
you can say sense or you can say direction. Okay, sense or direction, whichever you want to use, you can use those words. Okay, so suppose there was member AB. For member AB, whatever, suppose XYZ, the force was 1.502 and it was tension. So either you have to make a table like this, okay, which is going to consolidate all your answers, or there is another way, a fun way of doing things. You can again make the truss. Okay, and in this particular truss you can show all the data that you have determined, okay? The reactions that you have determined. I'm using different pens and all these things, but there is no need for you to use. You can make it as simple as possible. The directions and everything, that much will be enough for us to represent. Okay, so I'll just keep it simple like that. Okay, so you can show the reactions that we have determined. Okay, 1.25 over here, the 11.25. This is going to be 10 kilonewton. Okay, external force 10 kilonewton, external force 10 kilonewton. This member I think is in tension, so tension is away from the joint, 1.502. This member is in compression, 1.502. This member is in compression, I think it is 8.336 or something like that. Yes. This member is in tension, this member is in tension, this member I don't know what is, this is a Compression. Compression. It's compression. A, C, D, compression. Okay. Then what about CE? Tension is Tension. Okay. Magnitude of CD? What is the magnitude of CD? FCD, 4CD, 13.522. 13.522 kilonewton. So that way, if you want to write down, you can write down in the direction of the force itself. Okay. So FCE का magnitude कितना है? 1.502. So it can be written like this also, 1.502, okay, kilonewton in the direction of force like that, and you can put the directions like this. What is the value of the tension, which is 7.502. 7.502? So उसका नहीं इसका Okay, हाँ 7.502. What about this? 9.166. Okay, 9.166. So these are the ways by which you can produce your final answer for the solution of a truss. Is it clear to you? Yes sir. We have explained and solved a very basic truss, a very simple truss by method of joints. Do you understand now what is method of joints? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. yes, sir. कोई भी चीज जो आपको सिखाई जाती है वो आपके पास तभी तक रहेगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट बुक ऑनलाइन या कहीं से भी 2-3 प्रॉब्लम लेके और सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपकी पक्की हो जाएगी. Otherwise, you will forget that whatever I have explained. Okay? This complete lecture is recorded and is available for you to watch anytime you want to see from the uh, Google Calendar. Okay, your Google Calendar show the same entry that everyday lectures and everything. All the recordings are available over there, and you can go and watch it. But instead of watching the same recording again and again, I would recommend for you to solve a few problems of trusses related to method of joints. Okay, if you have your with you, those test books you can use for this. Okay. Is there anything in this lecture that you didn't understand or you want me to improve?
ये लेक्चर में कोई ऐसी बात थी जो आपको समझ में नहीं आई, या कोई ऐसी चीज है जो है कि मैं इम्प्रूव करूँ इसके अंदर? नो सर। ओके, सबको सब समझ में आ रहा है कि? यस सर, समझ। यस सर, आ रहा है सर। Okay. In the next lecture, we are going to discuss method of sections. Probably we'll start the introduction of the indeterminate trusses. Okay, and how to tackle indeterminate trusses, how to solve those problems. We'll see that. Okay. So thank you everyone for listening. We'll see you next. Hello sir.